Good evening, everyone. Can you hear me? Just type in any queries that you have in the message box. So, good evening, everyone. So, we can start now. Yesterday, we went through the block one. I guess I'm audible. You can just write down yes. Okay. Yes, Please don't unmute yourself. You can write whatever you have to say in the message. Okay. Thank you. Currently, my camera is not working, so we will continue without my camera. I hope you can see my PowerPoint presentation. Okay, so yesterday we were studying about the different organelles that were present inside the cell, a eukaryotic cell. So today we will be going through block 2. In block 2, we are going to study the movement of substances across the cell membrane, and this block also highlights the transport mechanism, and it focuses on the active transport, passive transport, and different other types of transport. And in this part, we are going to also study about the bulk transport and also the neurotransmitters. And this block is divided into 4 units, that is unit 5, 6, 7, and 8. And unit 5, we will now start with the membrane biology of eukaryotic cells. So these are the 4 units that we will be going through: biology of membrane and transport of ions, transepithelial transport, bulk transport, and neurotransmitter secretion. So everyone knows the biology of membrane, but still we are going to study how what is the biological membrane made up of. Okay, the biological membrane is made up of 3 components. One is your lipids, proteins, and carbohydrates. So we can see that in the figure there are phospholipid bilayer, then there is a hydrophobic head and a hydrophilic tail that is present. Okay, we will discuss about the assignment in the last part of this session. Okay, so for now you can concentrate on the briefing sessions of the bulk of the units. So it is made up of lipids, proteins, and carbohydrates. Lipids. If when we are talking about lipids, these lipids, it is of 2 types, that make up the phospholipid and cholesterol. So phospholipids and cholesterol, there are different types of phospholipids like phosphatidyl choline, phosphatidyl serine, and sphingomyelin. These constitute your membrane lipids. And along with that, your cholesterol is present. The phospholipids, along with the cholesterol, they make up the core area of the plasma membrane. As you can see, this is the core area of the plasma membrane, and it is made up of the phospholipid and cholesterol. Then when we come to the protein part, this protein, there are 3 types of protein present over here. That is, one is a peripheral protein, another is an integral protein, and then is a transmembrane protein. Often in some articles or in some books you can study that integral and transmembrane proteins are merged. So that the transmembrane proteins are also regarded as the integral proteins. Now, what are these integral and peripheral proteins? The as you know, this is proteins constitute the most abundant
composition in the plasma membrane. It is about 20 to 70% of the membrane composition. When it is present, this protein is present in the either side. It is known as the peripheral protein. And when it is integrated inside the lipid bilayer, that is, it has a folding and for helices and beta sheets, it is known as the integral proteins. And the transmembrane proteins are those proteins which help in the membrane transport. Okay, so here you can see this is the transmembrane protein, this is the peripheral protein, and this is the integral protein. Next part is the carbohydrates. These carbohydrates, these they form the sugar coating, and when they attach with a protein molecule, they are known as glycoproteins. When they are attached with the lipid molecule, they are known as a glycolipids. As you can see, a glycoprotein, it has an oligosaccharide chain along with a protein, and an glycolipid which has oligosaccharide chain with a lipid molecule. So this is a glycolipid. When it is attached to the lipid molecule, it is known as glycolipid. When it is attached to a protein molecule, it is known as a glycoprotein. Okay. So this is a lipid bilayer. When the concentration of the lipid molecules is present in a higher concentration, it forms a lipid bilayer. But when it is in a lower concentration, it forms a micellar structure. This is a double layer micellar structure, and this is a single layer lipid sphere. You can see if the concentration is lesser, they form a sphere. These are the membrane lipids that are present. Your phosphatidylserine, phosphatidyl ethanolamine, phosphatidylcholine, phosphatidylinositol. So these constitute your phosphoglycerides, that is your phospholipids, and the another part of the phospholipid is sphingomyelin. Next is your glycolipids. The glycolipid that is present in the cell, plasma membrane or the cell membrane is the glycosyl cerebroside. Now, when we talk about phospholipid composition of plasma membrane, you can see the lipid is the Ma'am, your phospholipid. presentation is not visible. Sorry, Yes, ma'am, it's visible now. is it visible now? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁମ୍ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକ ମାନେ ଦେଖାଯିବନି ଆପଣ। This is unit 5. Okay, zoom the PPT. Okay, I'm trying to do it. So, ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଜୁମ୍ କରିବା ଭିତରେ ଟିକେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲିପିଡ ମଲିକ୍ୟୁଲ କଥା ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଜେନେରାଲି ଅ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ତମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଯୋଉ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଅଛି, this head part, I think now it is zoomed. Is it visible now? Someone, only one can say yes, because I can't. Yes, ma'am. So is it clear now? ମ୍ୟାମ୍ ୟା ଦେହରେ ଜୁମ୍ ହେଇପାରୁଛି, ୟା ଦେହରେ ଫୋନରେ ବି ଜୁମ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଡିସପ୍ଲେରେ ଜୁମ୍ ଏବେ ହେଇପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମେ zoom କରିଦେଇଛି। Is it clear now? ୟେସ୍ Yes, ମ୍ୟାମ୍। ma'am. Yes, ma'am. ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ କରୁନି କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ମତେ ଉପର ତଳ ହବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିହବନି। ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଲେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ବାରମ୍ବାର ଅଟକିବ। Okay, we can zoom. ମ୍ୟାମ୍ Okay. ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯିବ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ଓପେନ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ, ସପୋଜ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଧରକ 12ରୁ ସିଧା 15 ନମ୍ବର ଯିବାକୁ ଯାଉଛି, ମତେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିକିନା ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ହଠାତ୍। ତ ଦିସ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗାଇଡର will help ଓକେ me. ମ୍ୟାମ୍, ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ।
ओके सो ये जो फॉस्फोलिपिड जितने आम कहूचे तार गोटे हेड पार्ट अच्छी आ गोटे टेल पार्ट अच्छी जो ऑरेंज कलर गोटे मुंड भाया अच्छी जोटा हेड पार्ट दैट इज हाइड्रोफिलिक माने कौन it has high affinity for water it can react with water it is water loving hydrophobic tail hydrophobic माने it is it is it cannot it has no affinity for water it will never react with water ସେଥିପାଇଁ कि ना ଯେତେ ଯାକ ଆମର ସଲ୍ୟୁଟ ମାନେ ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ର ଯେତେବେଳେ ବାହାର ପଟକୁ ଦେଖିବେ ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥାଏ that is why the hydrophilic end is towards the outside and the hydrophobic end that is water repelling end is towards the inside part. The hydrophilic head it consists of a phosphate group and a glycerol group. There are two fatty acid chains. One is ଗୋଟେ ସିଧା ଅଛି that is saturated fatty acid chain ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ବଙ୍କା ଅଛି କାହିଁକି ନା ସେଟା ଗୋଟେ unsaturated bond ଯେହେତୁ ରହି ଯାଇଛି that is a unsaturated fatty acid ସେଥିପାଇଁ କି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରୁ ମାନେ ଫସ୍ଫୋଲିପିଡ୍ ଲେୟର ର ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଏମିତି ଯୋଉ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ଥାଏ ତା ମାନେ କଣ that is unsaturated fatty acid. Okay. କିଛି ବି ଶୁଭୁନି। Is it audible for all of you? Yes, ma'am. Okay. So we talked about different composition of plasma membrane that is lipids, proteins and carbohydrates. And now we will go how I देखिले lipid रो structure केमती. Now we will go to the structure of proteins. Now this is the structure of protein. This is the alpha helix and this is the beta sheet. This is how your proteins are arranged, that is the integral proteins are arranged in the plasma membrane. Now when we talk of different models that were proposed by different scientists during the course of time, this is one of the model that is the sandwich model which was given by your Danieli and Davson. They reported that the lipid bilayer of the membrane, there are some layers of protein on each side. But the first model was given by Charles Ernest Overton, who studied on RBCs. And he proposed that
in 1900 that lipid layer, that your plasma membrane is composed of the lipid layer. Next was Gorter and Grendel in 1925. He proposed another theory. Then Robertson. दिशुनी मैम हाँ ହେଲା हाँ ଏବେ दिसिला ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ଦେଖା ଯାଉନି? ଏବେ ଦେଖା ଓକେ ଗଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା. Okay. So this is the sandwich model, and then there was another model which was given by Robertson, that is unit membrane model, and this one is your fluid mosaic model which was given by Singer and Nicholson, which is accepted till date. According to this model, in 1972, the plasma membrane is made up of phospholipids, cholesterol, proteins, and carbohydrates. Also, it proposed that the membrane is fluidic in nature. That is, this fluidity is मैम दिशुनी due to two lipid bilayer. मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम होची की ଗୋଟେ minute. So ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଣି ଦିଅ. मैम पढ़ेले बाहर की Network problem. Baigan. What is your favorite subject? Baigan. କିଏ ସେ ବାଇଗଣ ହବ? बाईगण भर्ता करी खाइदियो Baigan. ଓ ଭାଇ କାଲି ସେଡୋ ହଉଥିଲା ଆଜି ତମେ କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛ? ए तरुण भाई ये बाईगण 80 टंका रेट तमे कौन 10 टंका ଆଚ୍ଛା दौच कि ଆରେ ଆରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାଲି ସେ ସେଡୋ ସେମିତି କଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ हम्म बैंगन बैंगन कहाँ से आ रहे हैं? सेड काली मंदिर रे बसिके वीडियो देखुଥିଲେ कीर्तन करूथिले बेबी अरे काली श्रावण मैडम मास कुआडे सोमवार गले रहती मैडम ऑपरेट करि पार ना और जने दरकार छी ऑलरेडी वी लॉस्ट हाफ एन आवर ଲାଗୁଛି ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢା ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କ ଫର୍ମାଲିଟି ସେ କରିବେ ଆଉ ଆଠଟା ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହବ ଆଉ କଣ ଯିଏ ଯାହା ପଢିଥିବ ଗ୍ରୁପରେ କହିଦବ କୋଉ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପଢା ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଢିଦବା ଆଉ। କିଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମର ନା କହି ବହି ଦେଇଛନ୍ତି ଆସୁଛି ସେଇ ନା ପଢାଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ମିଶେଇକି ଦବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହି ରିସିଭ କରିନେ ସେତେ ଆମେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ବହି ରିସିଭ କରିଛେ ତିନିଟା ଆମର ତ ଏଇ ତିନିଟା ପେପରଟା ବୁକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିନି ଏଯାଏଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ରୁ ଆମେ ତିନିଟା ବହି ରିସିଭ କରିଛେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରୁ ଦିଟା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ହଁ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲେ? କ୍ଲାସ୍ କରୁଥାଅ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ହଉଛି ତ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆଜି ବହୁତ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି କି କେତେ ଜଣ?
ହଁ ମୁଁ କରିଛି ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଛି। ଆପଣ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା କରିନି। ଯିଏ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ PDF ବନେଇକି ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ସେଥିରେ ରାଇଟ୍ ଦେଖିକି ରାଇଟ୍ 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 କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନାଇଁ। କିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରାଇଟ୍ କଲେଣି? ଯେ PDF ଟା ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପରେ। ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେନ ରାଇଟ୍ ପେପର ଯିଏ ଆଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ସାରିଦେବେ। ଡାକିଣ ହାତରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ନା ପ୍ଲେନ୍ ପେପର? ପ୍ଲେନରେ ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଇଗ୍ନୋ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ରୁ ଯୋଉ ମେସେଜ ଆସୁଛି ସେମାନେ କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ? ସେମାନେ ବୋଧେ PDF ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ସେମାନେ PDF PDF ସେଲ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିତରୁ କୋଉ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ବି ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମେଲ୍ସ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବେସିକାଲି ସେମାନେ ବିଜନେସ ଟାଇପ ର ଆଉ। ଆମର ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ନା ଇଗ୍ନୋରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ନହେଲେ ପୁରୁଣା ହେଇଥିଲେ ତ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ ସବୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ସାଇଡରେ ଲେଖୁଛ ତ? ସିଙ୍ଗଲ ସାଇଟ୍। ହଁ ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ +3 ରେ ସେମିତି ତ କରିବି ଆଉ। କିଏ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେଣି ଗୋଟେ ଦିଟା ପେପର? ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ NOC ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ସେ NOC ମିଳିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ DAC କ୍ଲାରିଫିକେସନ ମାଗିଛି। ହଁ ସେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ କଣ? ସେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ର ଅର୍ଥ କଣ? କଣ କ୍ଲାରିଫିକେସନ? କ୍ଲାରିଫିକେସନ ନୋଟିସ ଟା ପଢିବେ ଭଲ କିନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଗ୍ନୋ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ମାନେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କ୍ଲାସ କେମିତି ହବ କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କୋଉ ସମୟରେ ହବ, ଏତେ ତ CL ମିଳିପାରିବନି। ଏମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। କ୍ଲାରିଫିକେସନ PDF ରେ ଭଲ କିନା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ହେଇଛି। ତ ଯାହାର ଇଗ୍ନୋରେ ଜୁଲୋଜିରେ ମାନେ NOC ଆପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ DAC ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ PDF ର କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ଆସିଛି ଏଇଆ। ହଁ ତ ସେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଟା ଠିକ ସେ ଆମର ଇଗ୍ନୋ ଦବାର ଅଛି, ତ ଯାଇକି NOC ଆପ୍ରୁଭ ହବ DAC କରିବ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ NOC ଆପ୍ରୁଭ ହେଇନି DAC ତରଫରୁ, କି ଆମ ସର୍ଭିସ ବୁକ ରେ ଚଢିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଗ୍ନୋର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ନୁହେଁ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ନା ନା ଇଗ୍ନୋ ନା PG। ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ପିଲା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ଯେ ଆମର DO ନା ଅଫିସରୁ ନା ନା NOC ମିଳିଗଲା ମାନେ, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ହଁ ସର୍ଭିସ ବୁକ ରେ ଆଜ୍ଞା ଚଢିନି ଆଜ୍ଞା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେଇଆ। ଆହୁରି କିଛି ଜଣ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତ ଅନଲାଇନ ଟାଇମ ରେ NOC ମାଗୁନି, ସେ କାଇଁ NOC ମାଗିବ? ଇଗ୍ନୋ କାଇଁ ମାଗିବ? କିଛି ତାର ହଁ ଇଗ୍ନୋର କଣ ଦରକାର? ଆଉ ତାର କଣ DAC ଗଲା ତ ମାଗିବ ସେ? ହଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଥର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ହଁ ହଁ ବୁଝିକି ସେଟା କରିବାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଛି। ନହେଲେ ସର୍ଭିସ ବୁକ ରେ ଚଢି ନଥିବ Sorry ତ for ଏଇଟା disturbing you ପକେଇଲେ again. We ଅସୁବିଧା। can start the session. ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। Okay. ତ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ? Actually ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସେଟା ଟିକେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତ we will continue over phone for now. ତ ମୁଁ ଟିକେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ତ ଆମେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ମାନେ ଚାଲିବା। ହଉ ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ ଚଳିବ। ଅଛି। ଓକେ। ତ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ? କି କହିବେ କି ମୁଁ କୋଉଠି ରହିଯାଇଥିଲି? ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ପ୍ରୋଟିନ୍। ହଁ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ପଢିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ କି ମେମ୍ବ୍ରେନ ଫ୍ଲୁଇଡିଟି ଉପରେ। ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଉ ଥିଲା ଫ୍ଲୁଇଡ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପ୍ରୋଟିନ ସେଇଠି ଥିଲା ମାନେ ଫିଗରରେ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ଆଲଫା କୁହନ୍ତୁ। ହେଲିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ପଢଉଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ରାଇଟ। ଆମେ ଯୋଉ ଆଲଫା ହେଲିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଥିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ମେମ୍ବ୍ରେନ ର ଦୁଇଟା ମାନେ ଲିପିଡ ବାଇଲେୟର ଯୋଉ ଥାଏ, ସେ ଲିପିଡ ବାଇଲେୟର ରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଟ୍ରାନ୍ସ ମେମ୍ବ୍ରେନ ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଉ ଥାଏ ଆଲଫା ହେଲିକ୍ସ ଦିଟା ଥାଏ। ମାନେ ଦି ପଟେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମନୋ ହେଲିକ୍ସ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ପଲି ହେଲିକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଥାଏ ଆମର ବିଟା ସିଟ୍। ତ ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ମେମ୍ବ୍ରେନ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମର କଣ ହୋଇଛି ନା, ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଧର this one is a lipid bilayer, they will span 7 times or 5 times. ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, this transmembrane proteins they help in interaction, cell interaction ରେ help କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଫଙ୍କସନ୍ସ କୁ, ମାନେ ଆମେ ପଢିଲେ ଆମର ଯେତିକି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ।
carbohydrates are an important part of the plasma membrane. तो कार्बोहाइड्रेट दुईटा टाइप रो अछि गोटे होची जेतेबेले गोटे लिपिड ग्रुप सहित लागि थाए सेटा होची ग्लाइकोलिपिड्स कहू जेतेबेले गोटे प्रोटीन ग्रुप को लागि थाए सेटा हमें ताकू ग्लाइकोप्रोटीन बोली की कहू तो एई जो ग्लाइकोलिपिड्स हमें जो कहूचु सेटा गोटे सुगर कोटिंग है कि जेतेबेले गोटे सेल ऊपर लागि की रही जाए सेतेबेले कोन हुए ना ताकू हमें ग्लाइकोकैलिक्स बोली की कहूचे and this glycocalyx is hydrophilic in nature. And this glycocalyx also helps in cell identification and also it can माने हमर सेल एंटीजन हमर जते माने ब्लड जदि हम आरबीसी को माने देखिबा द आरबीसी ए बी आ ओ ब्लड ग्रुपिंग को हिसाब रे थाए ना ए जो ग्लाइकोकैलिक्स ए जो कार्बोहाइड्रेट जो लागि थाए सेही हिसाब रे ही हे थाए तो due to difference in the carbohydrate group that is attached to the RBC सेही हिसाब रे हमें गोटे ब्लड ग्रुपिंग हमरो हे थाए आउ कोन रे हेल्प करे ग्लाइकोकैलिक्स ना इट आल्सो हेल्प्स इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ओके नेक्स्ट हमें जिबा होची हमरो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन रे हमरो फर्स्ट होची कोन ना इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर ओके the functions of plasma membrane it acts as a protective barrier it is a thin layer and also it regulates the ion channels माने हमरो बाहर जते आयन्स थाए गोटे सेल रो बाहर जते की आयन्स अछि आ भीतर जते की आयन्स अछि ताकू मैनेज करिया पई कि ताकू रेगुलेट करिवा पई कि हमरो यूज हुए होची हमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेगुलेट करि थाए आउ कोन करे ना there are some proteins that is present within the membrane तो जोटा मु कहूची ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जोटा विदिन द मेम्ब्रेन हमरो थाए they are called as integral proteins or transmembrane protein they also work as the transport system and also assist in the diffusion of ions inside and outside the cell तापरे आउ कोन ना हमरो plasma membrane also helps as a receptor and it also helps in transmitting the signals these receptors it provides the site for attachment of effectors such as hormones जेते हमर हार्मोन आसे गोटे सेल को किबा हमर एंटीजन स्पेसिफिक किछि गोटे एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट माने थाए गोटे सेल रे सेते बेले कोन हुए ना this plasma membrane the composition थाए it helps in determining the receptors which can attach at a particular site next the amara jo proteins or enzymes थाए membrane भितरे there are various cellular processes रे help करे okay these are the functions next हमें जिबा properties आपण माने जो रखी जानी जो माने कोन कहले मटेरियल ता सेटा टिके फॉलो करंतु काना हमें सेही हिसाब रे ही जाउचो so properties रे कोन ना first property होची it helps it has selective permeability सिलेक्टिव परमिएबिलिटी काली मु कहिथिली सिलेक्टिव परमिएबिलिटी माने कोन ना जेतेबेले हमरो माने सेल भितरु को कोनोसी आयन आसीबो किबा एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आसीबो इट इज वेरी मच सिलेक्टिव काहे कि ना सबु आयन्स सबु मॉलिक्यूल्स आसीबा हम सेल भितरु को किछि दरकार नै केतेबेले को मॉलिक्यूल दरकार केतेबेले कंसंट्रेशन भितरे लोअर हला बाहर आसीबो केतेबेले कंसंट्रेशन बाहर हाई हला तो सेतेबेले लो माने लो कंसंट्रेशन को आसीबो तो ए जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी माने होची परमिशन विथ परमिशन माने जेति की दरकार सेति की आसीबो एटा होची आ गोटे प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन आ गोटे प्रॉपर्टी कोन ना इट इज एम्फीपैथिक इन नेचर एम्फीपैथिक माने कोन एम्फीपैथिक होची जेतेबेले हम पढुथिले जो माने हमरो लिपिड्स लिपिड रो दुईटा नेचर अछि गोटे होची हाइड्रोफोबिक नेचर आ गोटे होची हाइड्रोफिलिक नेचर सेई जो हाइड्रोफोबिक आ हाइड्रोफिलिक नेचर रहउची लिपिड रो that contributes to the amphipathic nature okay next होची membrane fluidity तो मु कहिली next हमें जिबा हमरो role of plasma in ion transport role of plasma in ion transport there is different types of transport one is diffusion another is osmosis okay तापरे हमें आसीबा active transport आ गोटे होची passive transport diffusion माने कोन
विदाउट एनर्जी जेतेबेले गोटे सॉल्यूट आमर हाई कंसंट्रेशन को लो कंसंट्रेशन को जाए सेतेबेले ताको हमें कहू डिफ्यूजन। तापरे द रेट जो रेट गोटे मॉलिक्यूल जीव हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इट इज again guided by different factors. These factors are mass, concentration of the solute that is present inside or outside of the cell. तापरे आउ गोटे होची ओ एनवायरनमेंट अच्छी एसिडिक एनवायरनमेंट अच्छी किंबा बेसिक एनवायरनमेंट अच्छी सेटा भी गाइड करे। नेक्स्ट वी गो फॉर थर्मल एनर्जी। एबे देखो माने जदि मु कहिबी कि माने गोटे रूम रे सपोज हमें जस्ट गोटे इमेजिन करबा गोटे रूम रे होची बहुत सारा लोक गदा हेकिना अछंती तो बाहर जेतेबेले लाइन गोटे लंबा लाइन जेतेबेले हमर इलेक्शन चलथिला बहुत सारा लोक भीतर अछंती तो बाहर कोन आउरी भी लाइन लागि थाए तो सेतेबेले कोन हुए ना भीतर जेहेतु कंसंट्रेशन अधिका अछि बाहर कंसंट्रेशन अधिका थिले भी भीतर को आसी हबन काहेकि ना गोटे एनवायरनमेंट जोटा भीतर अछि दैट इज ऑलरेडी फुल सेमिति गोटे जदि बेसिक माने बाहर थिबो हां तनुजा और मनोज is there any problem you have raised your hands Manoj do you have to say something Tanuja do you have to say something No, ma'am. okay are you मु जहा कहूची त माने बुझी परछ त I'm making it clear or not हाँ हाँ बुझी Yes, पारछु ma'am. मैम। yes ma'am, Yes, yes ma'am. so जेतेबेले गोटे रूम रे अधिका लोक थांती सेठी कि आउ आसीबा किछि बाहर लोक दरकार न थाए ताहले से जो माने एनवायरनमेंट थाए सेठी आउ कोनोसी डिफ्यूज माने लोक आसीबा दरकार नै दैट इज वन काइंड ऑफ डिफ्यूजन दैट डिफ्यूजन स्टॉप्स सपोज बाहर बहुत सारा लोक अछंती आ भीतर को लोक आसीबा निहाते माने भीतर केही लोक नाहंती ताहले कोन होबो ना बाहर गोटे गोटे लोक भीतर को आसीबे तो सेटा होची माने आउ गोटे टाइप रो एनवायरनमेंट माने जोठी हायर कंसंट्रेशन अच्छी बाहर और लोअर कंसंट्रेशन अच्छी भितर सेठी कोन होबो ना हायर कंसंट्रेशन को लोअर कंसंट्रेशन तमरा सॉल्यूट आसे तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन डिफ्यूजन तापर आ गोटे अछि कोन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैम डिफ्यूजन इज सेम एज पैसिव डिफ्यूजन सुनो पैसिव डिफ्यूजन गोटे अछि आ गोटे अछि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन रे कोन होय ना डिफ्यूजन रे मु आगुरु कहि जे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एनर्जी पैसिव डिफ्यूजन कोन से आपे आपे हे चलिबो दैट इज आल्सो सेम एज योर डिफ्यूजन आउ गोटे फैक्टर होची डिफ्यूजन रे काम करे टेम्परेचर जदी हमें टेम्परेचर टर को बढ़े दबा दैट विल हेल्प टू स्पीड अप द डिफ्यूजन नेक्स्ट होची आउ गोटे टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल अच्छी दैट इज नोन एज योर aquaporins that assist in the transport of water across the membrane. A aquaporins it cannot transport the solute or your only it can transport your water. Now what type of diffusion अच्छी that is your facilitated diffusion. Eta kon हुए ना along with the concentration gradient. It is a very selective process. Okay. एतरे कोन हुए ना there are certain channel proteins. ए जो चैनल प्रोटीन्स कौन काम करे ना से चैनल सबु बेले माने देखिबो गोटे प्रोटीन चैनल जो थाए हमर मेम्ब्रेन सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन हमर गोटे प्रोटीन चैनल एंती अच्छे ए प्रोटीन चैनल ता सबु बेले खोलेनी देयर आर सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स व्हेन दे अटैच टू दिस पार्ट सेते बेले कोन हबो ना दिस ओपन्स अप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स सेमिति आ गोटे अछि वोल्टेज गेटेड जोटा कि वोल्टेज ऊपर डिपेंड करे इफ माने जदी हमर बाहर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ भीतर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गोटे डिफरेंस आसला दैट जनरेट्स अ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस जो आयनिक कंसंट्रेशन सेते बेले कोन हबो ना देयर इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द चैनल सो दिस इज अबाउट योर डिफ्यूजन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज योर ऑस्मोसिस पार्ट ऑस्मोसिस रे कोन हुए ना there is movement of molecules through a semi permeable membrane यदि आपण तमने माने मटेरियल यूज करूछ सेठी देखिबो मु कहि दोछि मटेरियल रे को पेज कहि दोछि टिके खाली डायग्राम्स उडा का रेफर करी कि जा
facilitated diffusion ର भी ଅଛି पेज नंबर तापर 91 मैम कौन होला पेज नंबर 91 रे अछि आपण पढो जंदी हाँ पेज नंबर 90 हाँ पेज नंबर 90 रे facilitated diffusion अछि पेज नंबर 91 रे होची हमर osmosis अछि ठीक सो हमर जेतले हमें osmosis हमर कोन movement of molecules through a semi permeable membrane which is controlled by a concentration gradient, that is water is present within the membrane and water moves from higher concentration to the lower concentration. सेठी हमें देखिबा धरक हमें गोटे हमर तीनटा टाइप रो सॉल्यूशन अछि गोटे होची हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गोटे होची आइसोटोनिक सॉल्यूशन आ गोटे होची हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कोन ना जते बेले आउटसाइड कंसंट्रेशन इज हायर आउ इनसाइड कंसंट्रेशन इज लोअर हां कि नै आउटसाइड कंसंट्रेशन जते हायर थिबो सेते बेले कोन हबो ता माने कोन more water is present in the outer medium and water moves into the cell सेठी कोन हबो ना सेटा होची hypotonic solution outside concentration is lesser than the inside ता माने भीतर कोन अछि हमरा अधिक concentration अछि सेठी देखिबो तमे देखिबो blood cell रो गोटे एग्जांपल देछि हैला blood cell रो एग्जांपल ता माने कोन बाहर जते बेले water is present in the outer medium and it moves inside to the cell ताले कोन हबो सेल रो वॉल्यूम जो थिबो आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी जीवो गोटे ऑप्टिमल पॉइंट परे that will burst okay you can see that is present in the hypotonic solution next होचे isotonic solution रे कोन ना बाहर जेतिकी concentration अछि भितरे भी सेतिकी concentration रहइबो so एइथरे पूरा सेल रो शेप ता सब बेले कांस्टेंटली मेंटेन हे कि ना रुहे नेक्स्ट होची कोन हमर ना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन माने कोन ना जत्ते बेले बाहर कोन हुए बाहर कंसंट्रेशन ता लो थाए भीतर कंसंट्रेशन ता बहुत अधिक थाए सेते बेले कोन हबो ना वाटर जो थिबो बाहर माने सेल भीतर दैट विल फ्लो आउटसाइड जते वाटर कंटेंट जोटा सेल भीतर थिबो जते बाहर को पळेबो ताले कोन हबो सेल स्ट्रक्चर विल बी श्रिंक हमर साइटोप्लाज्म रो मैक्सिमम कंपोजिशन होची कोन किबा सेल रो मैक्सिमम कंपोजिशन कोन वाटर जति वाटर ही बाहर को पळे आसीबो सेल गोडा को श्रिंक करि जिवो ओके सो दिस इज हाउ if you put an RBC mane red blood cell into different solutions, that is hypotonic, isotonic and hypertonic, it will change its function. Only the function only the structure of the or the morphology of the red blood cell is retained in case of the isotonic solution. So this also happens in the case of your plant cells. Okay, next हमें जिबा active transport रे कोन हुए एथरे हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट हुए ओके सेठी देखिबे आपण पेज नंबर हमर 93 ओके पेज नंबर 93 रे देखिबे एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे कोन होबो ना तमरा जो सब्सटेंस मूव करबो दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट in active transport सेथरे कोन होबो ना द सेल साइटोप्लाज्म इट जते बेले तार हाई क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम आयंस थाए और लो क्वांटिटी ऑफ सोडियम आयंस थाए तो से कोन करबो से सब बेले चाहिबो ए बैलेंस ता मेंटेन करबा पई की तो ए बैलेंस मेंटेन करबा पई की कोन करबो ना से बाहर कोन करबो ना सोडियम आयंस को भीतर को नबो हेले भीतर कंसंट्रेशन को मैनेज करे पई कोन होबो ना भीतर होची पोटेशियम आयंस बेसी अछि सी कोन करबो ना बाहर को पळे आसीबो एटा हुए गोटे ट्रांसपोर्ट चैनल थ्रू रे दैट इज कॉल्ड एट सोडियम पोटेशियम पंप्स ओके दैट इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन एई जते बेले हमर माने जो बैलेंस मेंटेन करिया पई कि ना जो चाले गोटे इक्विलिब्रियम मेंटेन करिया पई कि ना डिफरेंस कंसंट्रेशन हुए से कंसंट्रेशन डिफरेंस आउ ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस दैट इज गोटे ग्रेडियंट क्रिएट हुए से ग्रेडियंट को हमें कहू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ओके नाउ ए जो हमें पढ़िले जो माने जति की चैनल्स अछि
this is again classified into 3 types. Okay, one is uniporter, another is symporter, another is antiporter. ता माने कोन uniporter होची कोन it transports one ion or molecule at a time. Symporter कोन it transports the ions or molecules in the same direction. ହେଲା एटा सपोज मानि नियंतु गोटे आपनकर अछि चैनल यदि या भितर गोटे आयन गोटे टाइम रे पास करूची दैट इज योर यूनिपोर्टर. सिम्पोर्टर कोन ना दीटा आयन एका संगे पास करिवो इन सेम डायरेक्शन. एंटीपोर्टर कोन ना दुईटा आयन किंबा दुईटा मॉलिक्यूल ऑपोजिट डायरेक्शन रे पास करिवो दैट इज योर एंटीपोर्टर. ओके नाउ वी विल माने हमहु टिके खाली कहि देबी सोडियम पोटेशियम पंप केमिति ऑपरेट करे ना. सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट करिया पे हेले से जो प्रोटीन चैनल जो थाए सेठी फर्स्ट सोडियम आयन अटैच हबो. देन there is hydrolyzation of ATP. ATP जदि hydrolyze कला that will form ADP plus PI and the phosphate group that is released is attached to the protein carrier. तापरे कोन हुए द मेम्ब्रेन एक्सटीरियर माने से कोन करबो ना ओपन करि जिवो. मु कहिथिले जेतेले स्पेसिफिक हमर गोटे माने मॉलिक्यूल टे लागिबो सेते बेले कोन हबो ना तमर गोटे चैनल खोलिबो. एटे सेमति जेतेले फॉस्फेट ग्रुप लागिबो सेते बेले गोटे कैरियर प्रोटीन खोलिबो. तापरे कोन हबो ना there will be attachment of 2K plus ion and detachment of phosphate group from the potassium. এই जो हमर अटैचमेंट और डिटैचमेंट हबो एई प्रोसेस रे कोन हुए सपोज सेल शेप एमिति थिला सी कोन करबो ना मॉडिफाई हे जिवो. मॉडिफाई हेले कोन हबो सेल रो इंटीरियर स्ट्रक्चर भी मॉडिफाई हे जिवो. तापरे हमर दुईटा K+ आयन कोन करबो ना बाहर को रिलीज हे जिवो. दिस इज हाउ योर सोडियम पोटेशियम पंप इज बीइंग रेगुलेटेड. ओके तार पिक्चर आपण देखि परबे 94 पेज रे फिगर 5.16. ओके 5.16 से देखिबे केमती दुईटा Na+ हमर तीनटा Na+ जाकर दुईटा K+ बाहर को रिलीज हुए. तीनटा Na+ भितर को जीवो दुईटा K+ बाहर को आसीबो and this process is being regulated by ATP hydrolyzation that it forms ADP and PI. तापरे आउ गोटे अछि co-transport. Co-transport is often regarded as the secondary active transport. Okay, secondary active transport kono na this type of transport in eithre kon hoy na solute moves against its concentration gradient and requires energy. A process re energy to require karibo, it also releases energy. तो केमिति रिलीज करबो ना एठी जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्मेशन हुए सेतरे कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इंक्रीज करे ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. जेते बेला हमर कोन फास्ट होची भितर को पसिला सोडियम आयन इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें पढिले. किंतु गोटे केस रे कोन हुए ना बाहर जेते सोडियम आयन रो कंसंट्रेशन बढ़ी जिवो सेते बेले चैनल प्रोटीन्स ओपन करबो. when the channel proteins open karibo that is the Na+ ions they cross the membrane down the concentration gradient. माने जदि बाहर बेसी अछि से कोन करिवो माने भीतर जदि बेसी हे गला से अगेन कोन करिवो बाहर को पळेबो. So this is again managed by your different kinds of transport proteins that help in moving of the substances. So आउ कोन substances हे परिबो ना या सहित हमरो amino acids and glucose are also transferred through the co-transport method. तापरे आमे काली भी पढिथिले एंडोसाइटोसिस और फागोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस कोन एथरे large molecules will enter into the cell and एथरे कोन करबो ना त प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थिबो it will form an invagination. गोटे invagination structure एमती formation हबो and it will form around the target particle. माने suppose if this is the target particle या side रे गोटे invagination formation हबो. तापरे से कोन करबो that invagination will close and
the particle will get detached from the membrane, and this process is occurring in three types. One hochi phagocytosis, pinocytosis, and receptor mediated endocytosis. Phagocytosis कौन आमे सेल इटिंग बोली कहू, पिनोसाइटोसिस को आमे सेल ड्रिंकिंग बोली की कहू. ओके, phagocytosis रे कौन हुए, the larger substances enter into the cell. आ मोस्टली ए केसेस रे कौन जेतरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने ह्यूमन बॉडी को एंटर करंती, तमरो जो न्यूट्रोफिल्स थाए, they engulf this microorganism through phagocytosis process. तापर कौन होगा, these microorganisms again get destroyed by the lysosomes present in the neutrophil. Okay, next होची pinocytosis. एथरे कौन होगा, only water molecules get transferred to the cells through a process called pinocytosis. ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ, only water molecule ତୁମର ହବ. ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି receptor mediated endocytosis. receptor mediated endocytosis ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାନେ receptor protein ଯୋଉଟା ଆମର ଥାଏ, that is attached to the membrane bound clathrin proteins. Clathrin is one type of protein, सेटा membrane रे ଥାଏ, and it is capable of removing low density lipoprotein, that is an LDL. सेठी कौन हबो ना, क्लाथ्रिन जोठी अटैच हबो, दैट इज सम से जो हमर जेंति एठी कोन होतिला, एडा सेल ड्रिंकिंग माने खाली माने फॉर्मेशन हे जाउतिला ता चारि पटे, आ तापरे एनगल्फ करथिला, नहले एक्सोसाइटोसिस होत. एठी एंडोसाइटोसिस रे कोन हबो ना, देयर आर सम रिसेप्टर्स हैला, क्लाथ्रिन प्रोटीन्स आर द रिसेप्टर्स ओवर हियर. से रिसेप्टर कोन करबो ना, से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को भितर को नै कि अगेन फ्लिप करिकि ना भितर को रखिबो, and it will form coated vesicles. माने सपोज एटा धरक हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि, एठी गोटे गोटे रिसेप्टर लागिथिबो. ओके, आफ्टर अटैचिंग टू द receptor molecule, the substances which are specific to this receptor molecule, when they are attached to this receptor, it again forms a closed vesicle. That is why this is called as a receptor mediated endocytosis. Okay, तापरे आउ गोटे प्रोसेस होची एक्सोसाइटोसिस, जोथरे कोन हबो ना, से सेल भितरे जहा थिबो सेटा एम्ति बाहर जिवो. जेतले एंडोसाइटोसिस होतला कोन होतला ना, एम्ति थिला जेतले सेटा एम्ति फॉर्मेशन हे किना तापरे लाइसोसोम रे डिसॉल्व हे कि अगेन एक्सोसाइटोसिस थ्रू रे एम्ति बाहर जाय. ओके, so there are different methods of transport, active or passive, depending upon diffusion. passive diffusion अछि, सेई जेतले passive diffusion हबो कोन मेटेरियल जे ट्रांसपोर्ट हबो ना, there is low molecular weight substances transfer हबो. osmosis रे तुमरो वाटर ट्रांसपोर्ट हबो. facilitated ट्रांसपोर्ट हबो कोथरे ना, आयंस ओडा का तुमरो facilitated ट्रांसपोर्ट हबो. तापरे आउ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हबो. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे तुमरा अमीनो एसिड्स एंड लैक्टोज ट्रांसपोर्ट हुए. फागोसाइटोसिस रे लार्ज मॉलिक्यूल्स सेल्स एगुडा को ट्रांसपोर्ट हबो. देन नेक्स्ट पिनोसाइटोसिस एंड फागोसाइटोसिस रे स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हबो. रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस रे तुमरा मैक्रो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हबो. विथ दिस वी एंड द यूनिट 5. आपण माने जति कि माने कोर्सेस ऑफ आपनकर जो दिया है छि से ब्लॉक रे जति कि एसएक्यू आ समरी ताको टिके भलो से पढिबे. Okay, then we will move on to the transepithelial transport. What is transepithelial transport? This transepithelial transport is the transport of various ions and substances that has very important role in regulating various mechanisms of cellular activities. That is माने आपनकर जो pH गोटे ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल रो मेंटेन हुए. जो हमर स्टोमक रे जते बेले हमर डाइजेशन प्रोसेस होची, तार जो एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन हबो, किंबा तुमरो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेल एक्साइटेशन, एई सब जोथरे माने जो प्रोसेस थाए ता धरे जो ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व हेता ताकू हमें कहू ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट, एंड इट हेल्प्स इन maintaining the various activities of the cell. A process रे हमर कोन हुए ना, various ATPases आउ ion channels and transporters aid in epithelial transport. Okay, first
Transepithelial transport can be classified into passive process and active process. Passive transport kono? That the substances they move from its high to low. High to low ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ it is known as the passive process. Okay. Passive process ରେ କଣ factors ତମର include ହୁଏ ନା diffusion distance, ମାନେ ଯଦି distance ଅଧିକା ଥିବ it will take a longer time. ଆଉ କଣ ନା second ହଉଛି concentration gradient. If the difference in concentration of solute across the two membrane is greater, ମାନେ ଯଦି concentration ଗୋଟେ membrane ର ଏପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଅଧିକା ରହି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ rate of diffusion ବି ଅଧିକା ହବ ହେଲା। Then next hoji, for the movement of charged particles, the steepness of the electrochemical gradient determines the diffusion rate across the membrane. तापरे गोटे होची diffusion रा distance केते रहिबो, second होची concentration केते अछि, then mass of the diffusing substance. देखंतु माने मु जदी कहिबी कि माने आमे तो concentration ଉପରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, mass कोन केमिति रोल प्ले करे ना जेतेबे आमे गोटे मोटा लोकटे थिबो ताको जेतेबे माने कहिबु कि तू उठिके जा, सी जेतिकी स्पीड रे गोटे जगह रु आ गोटे जगह को जीवो निहाती तार कम अधिक स्पीड रे गोटे पतला लोकटे आउ टिके अधिक डिस्टेंस जाय परिबो. So that is why mass of the diffusing substance is also important during your passive process. तापरे नेक्स्ट टेम्परेचर, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶୀତ ଦିନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାମ ବେଶୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନା, ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ପଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ସେମିତି ମାନେ ଖରା ଦିନ କଣ ମାନେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଚା ହେଇଯାଏ, ଖରା ଟିକେ ପଡେ, ଆମକୁ ଟିକେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ. So that is why high temperature increases the rate of diffusion. ଆମେ ଯେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢେଇବା ସେତେବେଳେ movement of molecules ଅଧିକ ହବ. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି surface area. Surface area କେମିତି ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ କହିବି କି ଏବେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଥ୍ରୁ ରେ କେତେ ଅଳ୍ପ molecules ପାସ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବି ଆର surface area ଅଧିକ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଥ୍ରୁ ରେ କଣ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପାସ୍ କରିବ. So surface area also matters during your diffusion. Then your diffusion process is of three types. One is simple diffusion, facilitated diffusion, and your osmosis. We have already discussed simple diffusion अछि गोटे, आउ गोटे channel mediated facilitated diffusion अछि, आउ गोटे होछि carrier mediated facilitated diffusion अछि. Channel गुडाक कहिछि यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट. Carrier mediated facilitated diffusion मु कहिनी. Carrier mediated facilitated diffusion कोन हुए ना गोटे concentration gradient रे से कोन करबन, there is a carrier protein. That particular carrier protein से कोन करबो ना, supposingly if I say this is, you can see this is green in color, suppose this is the carrier protein. एटा कोन कर मते एई पेन टाको कोन करर अछि ना मेम्ब्रेन एपटू सेपटू को जिबार अछि, तो केवल एई प्रोटीन होछि केवल मेम्ब्रेन एपटू सेपटू को जाय परिबो, सेथि पय कि this pen attaches to this carrier protein. एबे कोन हबो ना एटा जेहेतु अलाउ होतला जिबा पय कि this can pass through the membrane now. So this is carrier mediated facilitated diffusion. Okay. हेलो मैम जहाँ भी डाउट अछि हमें टिके परे डिस्कशन मैम करबा, मैम टिके मेटेरियल टिके मैम कहि देबे सेटा ए जो कोन ब्लॉक टा हमर डिस्कस करछे हमें वर्तमान मेटेरियल ला काढी परिबी सॉफ्ट कॉपी रे. ब्लॉक 2 हमें डिस्कशन करछे. ब्लॉक 2 रो केते नंबर पेज टा मु माने खोजी पाउनी ब्लॉक 2 रो. 106. ठीक अछि मैम, धन्यवाद. So we have discussed there are three types of carriers. One is uniporter, symporter, and antiporter. In 106 page, you can see the diagram where there is a comparison between passive transport and active transport. एठी देखिबे जो transported molecule जो अछि आमर ग्रीन कलर रे यदि मटेरियल अछि देखंतु टिके, मु सेही मटेरियल रो ही डायग्राम अछि टिके देखि देबे. जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट
माने गोटे होची पैसिव ट्रांसपोर्ट गोटे पटे अछि गोटे पटे एक्टिव ट्रांसपोर्ट अछि किंतु जो पटे पैसिव ट्रांसपोर्ट अछि से पटे तीनटा आमे एका संगरे से देइची गोटे होची सिंपल डिफ्यूजन गोटे होची चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन आ गोटे होची कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन रे दुईटा माने देखिबे गोटे होची कैरियर प्रोटीन अछि दैट मींस इट हैज sites that can bind the carrier protein okay channel protein रे कोन अछि ना सेही चैनल प्रोटीन थ्रू रे गोटे ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल अटैच हे कि ना जाय परिबो सिंपल डिफ्यूजन रे देयर इज नो नीड ऑफ एनी चैनल प्रोटीन और एनी कैरियर प्रोटीन ओके तापरे इफ वी कंपेयर इट विथ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमर देखिबा से जो कैरियर प्रोटीन रे जेमति हमर एक्टिव बाइंडिंग साइट्स अछि सेमिति बाइंडिंग साइट हमर एक्टिव ट्रांसपोर्ट रे भी अछि किंतु ता से जो एक्टिव साइट रे बाइंड करिया पय कि हेले जो मॉलिक्यूल टा कोन हबो ना हमर दरकार होची एनर्जी जते बळे माने हम पढौची जोटी केटी इंपोर्टेंट लागुची सेठी मटेरियल देखि कि ना गोटे साइड रे लिखि दियंतु हेले टिके टिके मने रहि जिवो ओके नेक्स्ट आमे फिगर 6.5 को जिबा दैट इज इन 107 पेज ओके एठी कोन ना फास्ट होची आमे देखिबा देयर आर ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल गोटे होची यूनिपोर्ट दैट मींस यूनिपोर्ट थ्रू रे से जो ग्रीन कलर सब्सटेंस जो अछि दैट कैन पास थ्रू इट ओनली वन एट ए टाइम सिंपोर्ट रे कोन होची गोटे ग्रीन कलर अछि आ गोटे होची पिंक कलर अछि दैट इज को ट्रांसपोर्टेड आयन इट कैन पास थ्रू द सिंपोर्ट एंटीपोर्ट रे कोन होची ना गोटे बाहर को जाउची और गोटे भीतर को जाउची ओके नेक्स्ट आमे जिबा एबे एक्टिव प्रोसेस को ऑलरेडी 7टा हे गलानी एथिरे ए ब्लॉक सरी जिबा कथा देला हो आमे धीरे धीरे जाउचे टिके देखिबा तबरे कोन करबा आई होप माने समस्त बुझी परचंदी दुर्गा किछि कहिबो टिके आमे एठी ब्रेक नबा दुर्गा किछि कहूछ कि okay so we will go to active transport is of two types gote hoji primary active transport a gote hoji secondary active transport primary active transport re kon hue na energy is derived from the ATP hydrolysis ma agar koi sachi ATP hydrolysis mane kona na seti ATP जो हमरा तीनटा फॉस्फेट ग्रुप लागि कि थाए एडेनोसिन सहित सेटा भांगिबो and it forms ADP adenosine diphosphate plus PI से जो एटीपी जो हाइड्रोलिसिस हबो सेठी कोन करबो ना से कैरियर प्रोटीन रो शेप टा को चेंज करबो सेठो कैरियर प्रोटीन ता शेप रो चेंज हेले कोन करबो ना से पंप करबो जो माने जो हमर जो मॉलिक्यूल टा पास हबार थिबो ताको पंप करबो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट माने सपोज गोटे मोटा लोकटे अछि से पाचेरी सेपड़ को ताको चढ़ी के जीवा को कष्ट होची त हमें कोन करबा जने आउ दि चार जन आसी कि ताको कोन करबे ऊपर ठेलीबे तो जा 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 ताको किंतु कष्ट होची से जीवा को चाहुनी सो दिस इज व्हाट हैपेंस माने दुईटा जो फॉस्फेट ग्रुप माने फॉस्फेट ग्रुप लागि थिबो आ गोटे रिलीज हे जायथिबो से कोन करिवे ना से कैरियर प्रोटीन थ्रू रे ताको कहबे तू जा तो तते सेपड़ को जीवार अछि such carrier proteins are usually called as pumps okay एमती ए जो पंप गुडा करे एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल इज सोडियम पोटेशियम पंप नेक्स्ट होची सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटी से फिगर 6.6 रे देखिबे सोडियम पोटेशियम पंप अछि आ से जो सोडियम पोटेशियम पंप पय कि ना जो एटीपेस दरकार होय दैट इज Na+ K+ एटीपेस जोटा साइटोसोल रे देखिबे तीनटा Na+ अछि आउ तापरे फर्स्ट होची साइटोसोल रे तीनटा Na+ अछि आ सेही तीनटा Na+ बाहर को गले दुईटा K+ आसीबो फर्स्ट होची सेकंड फेज रे कोन होची ना एटीपी हाइड्रोलिसिस होय कि ना एडीपी फॉर्मेशन होची आ पीआई फॉर्मेशन होची दैट हेल्प्स टू पास द 3 Na+ टू आउटसाइड आ तापरे कोन हबो देयर इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट दुईटा K+ भितर को आसीबो इंपोर्टेड this is in figure 6.6 sodium potassium pump that is an example of active transport next होची secondary active transport एथरे कोन होची ना energy is stored in Na+ or H+ concentration gradient जेतरा हमर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हेतिला सेते बळे
गोटे Na+ ଆଉ H+ concentration gradient formation हेतला सेठी कोन हेतला ना हमर एनर्जी गोटे स्टोर हेतला एथरे कोन हबो ना indirectly dependent on the ATP hydrolysis माने सेठी active transport रे कोन हेतला ना directly ATP ऊपर dependent थिला एठी कोन हबो ना secondary active transport it is indirectly dependent काना गोटे प्रथम प्रोसेस रे से ATP यूज करि सरिछि सेकंड प्रोसेस रे कोन करबो ना से अगेन जोटा हमर एनर्जी स्टोर हे कि ना थिला से स्टोर्ड एनर्जी को अगेन यूज करबो दैट मींस इट इज इनडायरेक्टली dependent in secondary active transport Na+ and other substances it binds to the carrier simultaneously जो substances हमको पास करिवार अछि आ जोटा सोडियम आसीबार अछि सेटा कोन करबो ना कैरियर प्रोटीन को साइमल्टेनियसली अटैच हो तापरे कोन हबो ना these transporters that help to move the substances in opposite directions across the membrane आ सेथि पेंगे आपको कुआ जाय एंटीपोर्टर्स एथरे सिम्पोर्टर्स भी अछि आ एंटीपोर्टर्स भी अछि आर फिगर आपण देखिबे फिगर 6.7 जो अछि 108 पेज रे ओके सेठी Na+ K+ ATPase भी अछि आउ कैल्शियम पंप्स भी अछि एडा टिके देखिबे भलो से सो मो एडा को टिके ओवरलुक करी के आगु को बढ़ो छै नेक्स्ट वी विल गो टू ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स that is 6.2.3 that is present in 111 page okay so vesicles हमर कोन ना काली हमें पढ़ी थिले vesicle is a small spherical sac that is present inside the cell so a variety of substances are transported in the vesicles within the cells vesicles also import materials inside the cell and they release materials into the extracellular fluid the ए जो हमारा ट्रांसपोर्ट हुए जो वेसिकल्स वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट थ्रू द वेसिकल्स वन प्रोसेस इज योर ट्रांससाइटोसिस ओके ट्रांससाइटोसिस से कौन हुए ना वेसिकल्स दे अंडरगो एंडोसाइटोसिस ऑन वन साइड ऑफ द सेल and then move across the cell and then exocytosis occurs on the other opposite side so if this is the cell epodu endocytosis hobo epodu exocytosis hobo that occurs simultaneously so the best example hochi amara antibodies that is of a pregnant woman जेतेबेले क्रॉस करे fetal circulation को सेटा ट्रांससाइटोसिस थ्रू रे ही जाए ओके this is one of the example एठी गुटे टेबल अछि that is table 6.2 केमिति ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स वे सेटा टिके देखिबे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस धरक डिफ्यूजन होची तार डिफ्यूजन रे डिस्क्रिप्शन कोन आ कोन सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होची सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज सिंपल डिफ्यूजन गोटे होची पैसिव मूवमेंट डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गोटे नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट्स सेतरे कोन होबो ना नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट्स ऑक्सीजन नाइट्रोजन gases steroids and fat soluble vitamins substance transport hobo this is very important this table is very important in exam point of view ta apan mane tike seta bhalo se dekhibe तापरे नेक्स्ट पैसिव प्रोसेस अछि एक्टिव प्रोसेस अछि तार डिस्क्रिप्शन आउ तार कोन मटेरियल्स और सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हुए सेटा आपण देखिबे ओके नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू एथरे भी सेठी अछि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस यदि देखिबा को चाहछन 113 पेज रे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस अछि केमती वेसिकल फॉर्मेशन होउची जो रिसेप्टर लागिला हम कहिथिली supposingly मानि नियंतु this is your cell ए जो ऊपर भाग रे कोन हबो ना this is suppose a receptor this is your receptor ए रिसेप्टर रे कोन हबो ना तमरा जो मॉलिक्यूल टा ट्रांसपोर्ट हबार थिबो सेटा आसे कि लागिबो सेटा लागि सरला परे कोन हबो ना एटा धर केमते ओपन सीधा अछि तापर से कोन करबो ना एमते बंद हे जेबो this is the endocytosis process exocytosis रे कोन हबो ना सेटा एमते खोलिबो हला so this is the
एठी कोन हबो ना जेतेबेले एंडोसाइटोसिस हबो एठी वेसिकल फॉर्मेशन हबो and that vesicle will close and it will go towards the lysosome for degradation. तापर lysosome रे degrade हे सरला परे it is again expelled out through the process of exocytosis. Phagocytosis process भी सेठी अछि देखिबे phagocytosis process हम कहि छी सब बेले एग्जांपल होची कोन ना जो हमर माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स जो आसुचंती सेमाने रिसेप्टर रे लागि कि ना अगेन फागोसोम फॉर्मेशन हबो देन फागोसोम ता जो फॉर्मेशन हुए दैट विल बी अगेन अटैच्ड टू लाइसोसोम तापरे लाइसोसोम और फागोसोम से कोन करिवे ना दे विल फ्यूज विथ ईच अदर तापरे लाइसोसोमल एंजाइम्स जति कि थिबो से कोन करिवो ना माइक्रोब को डाइजेस्ट करी के चेष्टा करिवो देन द residual elements is carried out with the residual body. That process is phagocytosis. Then next transepithelial eta hochi gote cellular function. Different cellular functions are being regulated through this process. Next hochi amara maintenance of cellular pH. सेलुलर पीएच मेंटेन करबाटा कोठी नियाती जरूरी दरकार हम माने सब पढी चंती जते बेले होची हमर डाइजेशन प्रोसेस सेठी पढीथिबे निहाती जो हमर स्टोमक रे गोटे एसिडिक एनवायरनमेंट ता मेंटेन हुए सो दैट एसिडिक page number is 113 and then we are going to 114. Okay, please concentrate. So optimal pH गोटे मेंटेन हे कि रहे होची गोटे स्टोमक भितरे ओके सेटा केमिति मेंटेन हबो पुनी जदि स्टोमक भितरे गोटे पीएच ता लोअर पीएच रे रहिबो स्टोमक सेल उडाको काहे कि बर्न सो दिस इज ऑल अबाउट द मैजिक ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके तो फर्स्ट होची हमें पढिबा ऑप्टिमल पीएच ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स द बैलेंस बिटवीन द passive H plus जो हमारा थाए H plus ता efflux करे and active H plus pumping it will maintain the optimal pH माने केते amount रो H plus भितरु को आसीबो केते H plus रो amount ता बाहर को जीवो काना pH माने कोन it is the concentration of hydrogen ions से जो हाइड्रोजन आयन्स अछि केते बाहर को जीवो केते भितरु को आसीबो से जो पर्टिकुलर बैलेंस मेंटेन हुए सेटा होची हमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करिथे आ तार जो माने प्रोसेस अछि दैट इज regulated by your proton leak pathway हला से जो प्रोटॉन पंप आउ तमर कंडक्शन डिक्रीज करबा दैट इज थ्रू प्रोटॉन लिंक pathway तो जेते बेले pH 6.5 मेंटेन हबार थाए you can see the figure 6.14 that is on 115th page pH होची 7.2 अछि जोटा साइटोप्लाज्म रे सेठी कोन हुए ना जेते बेले रीसाइक्लिंग ऑफ एंडोप्लाज्म हुए एंडोसोम हुए सेटा pH 6.5 रे हबो किंतु बाहर केते अछि pH ना 7.2 रे अछि तापरे pH 6.2 रा होची ट्रांस गोल्गी नेटवर्क सेटा होची pH 6.2 so all this pH has been maintained by the transepithelial membranes next होची 6.3.2 रे अछि हमरा source and regulation of organellar acidification एथिरे गोटे पिक्चर अछि नहीं पिक्चर तो एथिरे नाही तो मैं एटा खाली कहि दउ जे अपन माने मन रखंदु द एथिरे कोन होय द pH प्रोफाइल ऑफ द कंपार्टमेंट जति कि माने हमर कंपार्टमेंट अछि लुमिनल pH अछि इट varies from time to time and in a very systematic and a controlled manner ए जो जेमति हमर ट्रैफिक मेंटेन हुए माने गाड़ी जेतले हमें चलाओ जो हमर ट्रैफिक मेंटेन हुए एपटे अधिका बेले बेले ट्रैफिक लाइट ऊपर हमें डिपेंड न करी कि ना जेते बेले जो पटो दरकार हुए आगे से पटे छड़ा हुए सेही टाइप रो ही ट्रैफिक गोटे मेंटेन हुए हमर एई जगह रे जेते बेले pH मेंटेन करा हुए हैना द एसिडिक लुमिनल pH mediates the optimal operation of different microbicidal agents and it is essential for the membrane fusion that promotes maturation finally
it forms the phagolysosomes. ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି phagosome ଯେତେବେଳେ lysosome ସହିତ fuse କରିବ, that forms your phagolysosomes. ତାପରେ କଣ ହୁଏ, the impaired proton homeostasis ମାନେ ଗୋଟେ proton homeostasis ମାନେ homeostasis ମାନେ କଣ, ଯେମିତି କି ଆମ ବଡିରେ ବି homeostasis ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଯାଏ, ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ତ ବଢେନି, ସେଟା ଗୋଟେ କେମିତି ରେଗୁଲେଟ ହୁଏ, that temperature is regulated through a process called homeostasis. ସେମିତି ଆମର ସେଲ୍ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ homeostasis maintain ହୁଏ, that is known as a proton homeostasis, which modifies the antimicrobicidal potential of the phagocytes, and it helps in removing pathogens and routing of the pathogens. तापरे आउ गोटे एई प्रोसेस रे आउ गोटे जिंसा कोन हेल्प करे ना, एटीपी सिंथेस। ए जो एटीपी सिंथेस जो अछि, it exploits the proton motive force to generate ATP. Hello, there are different types of ATPase forms, that is V ATPases, H plus ATPases, and other different types of মানে ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି vacuolar type ATPases, that is known as a V ATPase. These vacuolar type ATPases, they actively pump the protons against the electrochemical gradient, okay, into the organellar domain. Say जो V ATPase driven rate of proton pumping ta, this maintains the balance between the organellar ମାନେ जो organelle भितर जो H plus थिबो आ बाहर जो H plus थिबो ताको मेंटेन करे। बेले बेले कोन हुए, सेई जो H plus गुडा को लीक करी जाए, that maintains the steady state of the pH, okay. तापरे कोन हुए, एंडोसोम से जो एसिडिफिकेशन ता माने रिक्वायरमेंट थाए, सेटा कोन पे रिक्वायरमेंट थाए ना, it helps in proper sorting of the receptors from their respective ligands. सब बेले मु कही आसुची, there are certain receptors, गोटे particular receptor ही गोटे particular molecule सहित bind करिवो। आ एथि पय कि ना हमर acidification and optimal maintenance of pH in the cell दरकार पड़े। So this is how a V ATPase, it helps in the proton leak, जोटा के stabilize करिवो कोन ना organellar or endosomal organelle रो pH maintain करिवा पे। Next we will तमे माने पढ़ी परिबो acidification of stomach। जो कहथिली मैम V0 एंड organellar काना जाय छै। organellar pH जो अछि, सेटा तार बेस्ट एग्जांपल होची तमरा एसिडिफिकेशन ऑफ स्टोमक। माने स्टोमक रे डाइजेशन प्रोसेस रे केभली भाबरे हमरो माने रहुची होची मैम pH में V पेज रे V0 ओ V1 कोन बुझौ छै सेटा? कोटा V80 पेज जो अछि सेतरे गोटे कॉम्प्लेक्स अछि V0 आ गोटे V1 बोली सेतरे सेटा नाम होची तार सब यूनिट्स। V0 और V1 होची तार सब यूनिट। V0 माने जेतले V80 पेज हमें F80 पेज कोचे, सेटा होची जेमति काली हमें कहतले राइबोसोम अछि, तार राइबोसोमल सब यूनिट्स अछि। सेमति V80 पेज दुइटार तार दुइटा सब यूनिट अछि, गोटे होची V0 आ गोटे होची V1। V0 टा होची हमर कोन, सेटा होची पेरिफेरल कॉम्प्लेक्स, माने जोटा पेरिफेरी रे मेम्ब्रेन रो। V1 टा होची मेम्ब्रेनस पार्ट, माने तार मेम्ब्रेन भितरे जोटा इंटीग्रल हेके थिबो सेटा होची V1। एटा टिके पढ़ थैंक यू। हला। ओके नेक्स्ट होची एसिडिफिकेशन ऑफ स्टोमक, सेटा भी टिके समस्त पढ़ी देबे। आमे टिके फास्ट जिबा काहे ना ऑलरेडी 17 हे गलानी। ट्रांससेलुलर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट भी अछि, that is in page number 118. It is very important in माने पढ़े एटा बेले बेले क्वेश्चन तमरो एग्जाम रे, ओके। देन नेक्स्ट होची सेल एक्साइटेशन। सेल एक्साइटेशन हमर जनरली कोठी हुए, जेते बेले हमें नर्वस माने जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढू, हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे जेते एक्शन पोटेंशियल हमर पास करे, सेते बेले हमर सेल एक्साइटेशन हुए। The cell excitation process is also a part of a transepithelial transport. Okay.
So there are different factors that determine the resting membrane potential. गोटे होची action membrane potential अच्छी आ गोटे resting membrane potential अच्छी. Resting membrane potential पाएंगे ना there are different factors. से जो different factors अच्छी one होची तुम्हारा chloride ion, गोटे होची sodium ion, गोटे होची potassium leakage channel, आ गोटे sodium leakage channel. एथरे भी तुम्हारा Na plus K plus ATPases अच्छी. हला रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माने कोन जेतला मेम्ब्रेन टा होची रेस्टिंग स्टेज रे थिबो ताको हमें कहू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. Then there are different types of channels through which ions can pass. गोटे होची leak channels. Leak channels कोन करबो ना it will allow the entry and exit of Na plus and K plus ion only. तापरे आउ कोन करबो leak channels also they contribute to the generation and maintenance of resting membrane potential. सब बड़े गोटे membrane कौन करिवो ना it will always try to be in rest. आमे सब बड़े कौन करिवो माने टिके काम करदे जेमति हालिया है कि we go to rest. आमे टिके चाहू कि rest मिल जाओ सही बड़ा. तो leak channels सब बड़े कौन करिवो ना it will maintain the resting membrane potential. Next आउ गोटे type रो channel अछि that is chemically gated channel. Okay, chemical gated channel kono na there are certain ligand, that is chemical substances which are present and these channels have receptors. Upon binding to this receptor the channels open माने जो molecules हमर थाए से कोन करिवो ना ए जो ligand गुडाको सहित एमती अटैच हबो जेमती म देखैथिली ए जो पेन. Suppose this is a ligand. हमर ए ligand टा गोटे membrane through रे ए membrane through रे माने एपट सेपट पास कर परिबो. तो या संगे जोटा स्पेसिफिक माने सब्सटेंस जदी लागी गला ताले से कोन करबो ए मेम्ब्रेन थ्रू रे पास कर परिबो दैट इज केमिकली गेटेड चैनल. आ गोटे होची कोन वोल्टेज गेटेड चैनल. वोल्टेज गेटेड चैनल रे कोन हबो ना जनरली हमर जतले Na+ हैला किबा K+ हैला कि H+ आयन्स हैला सेटा जते बळे तार बैलेंस बिगड़ी जाए देयर इज अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स inside and outside of the cell, and that leads to a electrochemical gradient or potential gradient. That potential gradient is regulated by a voltage gated channel. Next is mechanically gated channels. Mechanically gated channels kono na ame jetebale mechanically kiछि jinso ko push kariba माने किंबा outside pressure देखना कहबा कि तू जा बोली कि that is called as mechanically gated channel. Supposingly हमर example होची कोन जते बेला हमर कैंसर हैला किबा किछि टाइप रो डिजीज हैला तो आमे कोन करू ना डिफरेंट सब्सटेंस आमे सेल भीतर को इनकॉर्पोरेट करू. So that substance is an external substance. It does not contain any kind of receptors in the cells. So mechanically हमको कोन करे करिया को पड़े ना से जो substance होडा को insert करिया को पड़े. That is mechanically gated channels. That is the आउ channels हमरो माने बना है कि ना से थ्रू रे ही जाए. So this is all about your transepithelial transport. Next we will move to unit 7. तो एठी जहा जहा सब समरी अछि टिके देखि देबे कोन कोन पढिले ए जो पार्ट रे सब जिंस त कवर करी हेबनी काना आधा घंटा रे ए सब जिंस माने पढेबाटा बहुत कष्ट. तथापि तो आज मु देखौची माने माने पावर पॉइंट बनेतली बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच इट डिडंट वर्क. ओके सो नेक्स्ट हमें जिबा बल्क ट्रांसपोर्ट. तो हमें फास्ट पढिथिले माने हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर पढिथिले तापरे हमें ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट पढले एबे हमें पढबा बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क ट्रांसपोर्ट कोन ना हमें सब पढ़ी आसिले गोटे पर्टिकुलर आयन हैला किंबा गोटे छोट मॉलिक्यूल हैला सेटा केमिति ट्रांसपोर्ट करछि. बल्क ट्रांसपोर्ट रे पढिबा हमें केमिति लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स ऑफ फूड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करिवो बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन रे. ओके तो ए जो प्रोसेस रे मोस्टली हमर माने काम दिए होची रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस.
बारंबार ये जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस टा आसुची एटा बहुत गुडा केस रे माने रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस टा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे आसे सो यू कैन मार्क दिस तो एंडोसाइटोसिस केते प्रकार आउ एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस भितरे डिफरेंस कोन आउ मोस्टली रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस टा हमर सब बेले दरकार रे तो मैम हेलो हाँ मैम इट्स माय रिक्वेस्ट प्लीज कैन यू स्पीक बिकॉज is it very Anudia? I can't hear you properly. Can you just type in what you are trying to say? I can't hear you properly. Can you just type in the message box? Okay. I think she wants that I should convey it in complete English. Okay. So we will go. Okay. Do you have any WhatsApp group so that I can share you the PPT? Okay, you can just, do you have my mail ID? You can note it down. BAL.ABHI. Just I am typing it out here. So you can put in your queries in this mail ID of mine. Okay, so we'll proceed now. So she wants that I should continue in English as she is unable to understand Odia. So we will now study about the mechanism of selective uptake of particular macromolecules by the receptor mediated endocytosis. In the first step, the macromolecules, okay, I'm continuing in English, don't worry. So in the first step, what happens? The macromolecules which are to be taken inside the cell, it first binds to the specific receptors on the cell membrane. As I told earlier, that these membrane, they contain some receptors and the macromolecules, they attach to these receptors. And generally, these receptors are located in the clathrin coated pits. I already told that clathrin is a kind of protein which is present in the surface of your, if this one is your cell, so this clathrin is present on this surface, and to this surface your respective molecule is attached to the clathrin receptor. Now these clathrin coated pits, they bud off from the cell membrane and they form a clathrin coated vesicles. Now these vesicles, they contain the receptors and other macromolecules that are attached to these receptors. Now what happens, this membrane associated GTP binding protein, they assist in budding off. So first there is receptors. To these receptors, some of your molecules, macromolecules get attached, and now this closes it by the process of endocytosis, and then this completely buds off from the main cell, and this budding off from the main cell process is guided by some GTP binding protein, which helps in budding off. Then what happens after this budding off, these clathrin coated vesicles, they quickly release their coats and combine with early endosome. So there were some endosomes inside the cell. Now these clathrin coated vesicles, they will combine with these endosomes. Now these endosomes, they are completely located at the periphery of the cells. Why they are located? Now they also take part in the exocytosis process. Now when there is some cellular activities, that is cellular excretory materials, this
go out through the process of exocytosis. Now, these early endosomes, they behave as the sorting compartments, and the molecules uptaken via endocytosis are recycled to the plasma membrane, and either they go through the plasma membrane for exocytosis or they go to the lysosomes for degradation. Now, the early endosomes, they transfer the endocytosed protein or ligand between various domains of the plasma membrane. Now, for this process, there is requirement of the pH, that is the acidic internal pH. So, this process is completely guided by the acidic pH, and this happens due to the action of a membrane H plus pump. Now, these receptors are again incorporated back in the plasma membrane. After the whole process is over, that clathrin receptors, they again are incorporated in the plasma membrane via transport vesicles, and they again are utilized for capturing some more macromolecules. Now next we go to there is clathrin independent pathways of endocytosis, so you can go through that process. It is very important in the exam point of view. Then we will go to the protein sorting and targeting to organelles. Now, what is protein sorting? There are different kinds of proteins inside a cell. That may be around 10,000. Now, these are being synthesized by the cytosolic ribosomes through the translation process, isn't it? And these are again confined within the cells. But after the process of translation, when they are present in the cells, there is a need that these proteins should be sorted properly. That means a particular protein is capable of helps to balance or regulate a particular function. So for that, it needs to be sorted, and then it needs to be targeted to the particular organelle which can carry out that function. So there are many hormone receptors and transporter proteins which target these proteins to the plasma membrane, and there are certain water soluble enzymes like RNA polymerases and DNA polymerases which are targeted to the nucleus. So now the protein that is to be targeted, that protein to be ମ୍ୟାମ୍ LDL ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? LDL ହେଉଛି low density lipid. Okay. Thank you. So the protein that may be targeted during or immediately after synthesis after translation. Now the membrane proteins are inserted within the bilipid layer, while water soluble proteins are translocated across the membrane into the aqueous interior of the organelle during targeting. This mechanism of protein sorting to endoplasmic reticulum. Suppose a protein needs to go to endoplasmic reticulum for a particular process. And some other proteins, they need to go to the mitochondria for a particular function. Some other proteins, they go to chloroplast. Some they are sorted. Like suppose a number of 300 students, they got admitted into a college, but out of these 300 students, all are not going to study the same honors. So there are students who are going to study mathematics, who are going to study English, who are going to study philosophy, who are going to study political science. So they are going to be sorted out after they are being getting admitted, which honors they are going to take. So this is the process which also undergoes inside the cell for the sorting of proteins which are being targeted into a particular organelles. That some proteins needs to go to endoplasmic reticulum, some proteins needs to go to the mitochondria, some proteins they need to go to chloroplast, peroxisomes, and also the nucleus. Then this process exists for certain proteins which are initially targeted to the endoplasmic reticular membrane.
There are some nascent proteins. Nascent proteins means initial or those proteins which are just translated and they're present without any kind of modification. These are called as your nascent proteins. They are still in the process of being synthesized and are targeted to the endoplasmic reticulum. Then there are proteins which are transported to the Golgi, to the lysosome, and to the cell surface, which are transported across the secretory pathway by small vesicles. So these proteins, they undergo the secretory pathway and they are directed towards the proteins, towards the specific organelles. Okay. So there is a major protein sorting pathways in eukaryotic cells. That diagram you can see, that is figure 7.2 and page 136. You can see from after being translated they are through the ribosomes, that is phase 1. It is going to the endoplasmic reticulum signal sequence, and then it is going to the rough endoplasmic reticulum, and then it is going to the Golgi complex. Then in another part, the targeting sequence, it first goes to the mitochondria, to the outer membrane of mitochondria, and to the outer membrane of chloroplast, then to the peroxisome, and then to your other organelles of the cell. So this is how your protein sorting pathways help in sorting the proteins that are required for the different organelles. Next is translocation of secretory proteins across the endoplasmic reticulum. We are on the page 137. Okay. So you can go through it. We will complete this 7th unit as soon as possible because it is already 7:35. Thus, you can see a picture on 139 page, that is figure 7.3. So this picture, just move on to that page, that is 139. Okay. In 139, there is a figure that is 7.3. It shows the secretory and endocytic pathways of protein sorting. Okay. So there are two types of transport. One is your retrograde transport, another is anaerobate transport. So here mostly it is following the retrograde type of transport. Okay, so you can see in the plasma membrane there are no, first we are going to start with the retrograde Golgi to ER transport. So you can see through the cis Golgi network, it is going to the which one? Cis Golgi network again to the budding, and then it first is budding and fusion of endoplasmic reticulum to the Golgi vesicles to form cis Golgi. And through this cis Golgi network, it is going to the cysternal progression, and then to the medial Golgi, and then to the trans Golgi network. And from the trans Golgi network, it is going to the constitutive secretion, regulated secretion, and then it is sorted to the lysosome to form the endocytic vesicle and late endosome. There is one primary endosome, another one is late endosome. Okay. So there are different molecular mechanism of this vesicular traffic, and this is being regulated by different receptor molecules and different integral membrane proteins, which include proteins like V snares, which help, and T snares, V and T snares. So V snares is present in the vesicle membrane, and T snares, it is present in the target membrane, which help in the vesicular transport also. So there are different coated vesicles also, and they have different functions, like that is COP2, and that COP2, it transports proteins from rough endoplasmic reticulum to the Golgi,
and there is COP1 which transports the proteins in retrograde direction between Golgi cisternae and cis Golgi back to the rough endoplasmic reticulum. Then there is another type of coated vesicles, that is clathrin, which helps in transport of proteins from the plasma membrane and the trans-Golgi network to the late endosomes. Okay. So next we will move on to the targeting of protein to the lysosome for degradation. Okay. So lysosome formation, without the formation of lysosome, your degradation of the excretory materials doesn't happen, because some proteins which are not needed for the cell needs to be degraded. So these lysosome, they contain the hydrolytic enzymes. So lysosomal membrane, it keeps those enzymes, and these hydrolytic enzymes are synthesized in the rough endoplasmic reticulum, and then it is transported to the lysosome. And these enzymes, they work at a pH of 5. So that it is working in a very acidic environment. So we will now study, that is 7.4.1, that is 144 page, that is lysosome formation. So these lysosomes are formed as a result of the fusion of some transport vesicles. So I earlier told that when there is transfer of proteins to different target specific organelles, that happens to the transport vesicles. After that transport occurs of the macromolecules, these vesicles, that is transport vesicles, they fuse with each other, and they fuse at the trans-Golgi network with the endosomes, and there where the lysosomes is formed. You can see the picture over in the page I earlier showed how the pH is maintained, that is outside is 6.2. When it comes to endosome formation, it again reduces. So this is how the pH is maintained whole through the throughout this pathway. So here, when endosomes, they fuse with each other, the endosomes contain some, कोई बोल रहा है हिंदी में पढ़ाइए, कोई बोल रहा है इंग्लिश में पढ़ाइए, कोई बोल रहा है उड़िया में पढ़ाइए, ऐसा तो नहीं होगा. So we will go through the English only, because it is now universal. Your materials are in English. We can't convert it into Hindi. Okay. थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है. So everything is written in your material. Okay. आप लोगों को जो material provided है ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, उसमें सारा सब कुछ दिया गया है. My Hindi is not good. So हाँ, कहाँ पे हम लोग थे? So endosomes they also contain some molecules, and these molecules are taken up by endocytosis at the plasma membrane. Then these plasma membrane, as I told earlier, it bursts off to form the endocytic vesicles. These endocytic vesicles contain the clathrin coated receptors. Now the cell membrane components are recycled to the plasma membrane, and the early endosomes, they mature into the late endosomes. This maturation involves the decreasing of internal pH to about 5.5. As I told, हम लोग वहाँ पे भी देखे थे कैसे जहाँ पे मतलब जब वो वॉइस कॉट है उचे. There may be some technical glitch over here due to the network problem. So I'm staying in a very remote area, so there may be some technical errors. So please adjust with that. So maturation involves a decreasing of the pH to about 5.5. So which is required by, why it is required? Because the lysosomal enzymes, they work in a very acidic environment. Okay. So here we come across another receptor, that is mannose 6-phosphate residues. These mannose 6-phosphate receptors, they are located in the membrane of the trans-Golgi network.
transmembrane network, and to which the mannose 6-phosphate residues are bind and are packed in the clathrin coated vesicles. Say जो हमर clathrin coated vesicles थिला ସେଇଥିରେ କଣ होतला ना खाली आमे देखुतले क्लाथ्रिन ही माने होची थिला रिसेप्टर किंतु एबे आमे जेतेबेले हाइड्रोलेज हमरो जो mannose 6-phosphate residue अछि it helps in transport of acid hydrolases to the lysosome. এইখানে কোন হবো না these transport vesicles they fuse again with the late endosomes and the clathrin coat is removed after that. तापरे कोन हबो ना तमरो जत्ते कि हाइड्रोलेजेस अछि से कोन करिवो ना it will dissociate जो हाइड्रोलेजेस कोन थिला फर्स्ट अटैच हे कि ना तमरो mannose 6-phosphate से तो लागी कि ना थिला काहे ना mannose 6-phosphate होची रिसेप्टर थिला तमरो ट्रांस गोल्गी नेटवर्क रे एबे हाइड्रोलेजेस कोन करिवो ना it will dissociate from the mannose 6-phosphate receptor, and this happens due to the change in internal acidic pH change हला माने तांकर जो एसोसिएशन थिबो सेटा भांगी जेबो तापरे कोन हबो ना late endosomes will mature into lysosomes. So first होची early endosomes will form late endosomes, and then these late endosomes will mature into lysosomes. Then these receptors which were present are eventually recycled to the Golgi. Okay, so this is about the lysosomal formation. Now the molecular mechanism pathway of the secretory pathway is there. You can go through it. एटा टिके माने लंबा अछि तुमे माने पढ़ो जदि पढ़ी न पारी कि बुझी न पारला we will take a discussion class over this. So that was all about lysosome. Next we come to the endoplasmic reticulum pathway. Endoplasmic reticulum pathway रे अछि तापरे Golgi apparatus अछि Golgi apparatus तापरे हमें anterograde और retrograde transport पढ़े mechanism of vesicular transport एटा टिके तमे माने पढ़िबो केमिति Golgi माने हमरो endoplasmic reticulum रे जो अछि माने enzymes ताकू केमिति biosynthesis करी membrane phospholipids are found, and सेटा तमे माने टिके पढ़िबो mitochondria केमिति synthesize करिवो phosphatidyl ethanolamine. So that is all mentioned in the endoplasmic reticulum जो तमरो secretory pathway परे अछि सेटा पढ़िबो तापरे Golgi apparatus भी टिके पढ़िबो सेटा पढ़ेले ना बहुत टाइम लागिवो. Next होची mechanism of vesicular transport, that is anterograde type of transport भी अछि आ गोटे होची retrograde type of transport अछि. तो एटा टिके माने सब pathways जत्ते की अछि सेटा होची टिके भलो टिके डिस्कस करबा कि steps that are involved in the anterograde transport. मैम एग्जाम तो डिसेंबर रे अछि ना हमें धीरे धीरे सब क्लियरली पढिले हबोनी कि किंतु आमे को 8टा क्लास रे ही कंप्लीट करिया को दिया हेचे सेते पय कि हमको एडा को केमिति पॉसिबल है मैम एते सब बुझियो किछि भी भलो से बुझी होनी क्लियरली एथि पय कि तो मटेरियल टा एक्चुअली आपण माने देखिबे जदी मटेरियल रे बहुत भलो से दिया हेचे सब जिंस लाइन बाय सेटा तो लाइन दिया पढिबे ही मैम टीचर्स माने क्लियरली टिके बुझे देले मटेरियल्स पे पढिले भी सहज लागे सेटा हाँ मु बुझुची किंतु किंतु कोन करबा एटा तो पूरा 6 मास पढिबा कथा 6 मास माने जदी हमें देखिबा गोटे ଏବେ ବି ଟାଇମ ଅଛି ନା मासरे ଅଧ 24 ମାସରେ घंटा ଅଛି ନା हम्म 4 ମାସ ତ ପଢି ପାରିବାନି ଆମେ 4 मास पढि परिबानी काहे कि ना इग्नू इज अ माने कोन डिस्टेंस कोर्स ओके सो खाली न्यूरोट्रांसमीटर टा एटा देखि दियो टिके माने जहाँ भी डाउट अछि यू कैन मेल मी मु आपनको लेखिकी ना माने बुझे परिबी काहे कि ना आउ आमे जेहेतु अलगा माने जॉब रे भी अछु जेहेतु मु रेगुलर पोस्ट रे अछि
I can't take ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡାମ? ନା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ହଁ ମେଟେରିଆଲ ରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡୁଛି ପଢିଲେ। ହଁ ଫିର ବି ମେଟେରିଆଲ ଆପଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆପଣ ଓଡିଆରେ ପଢେଇଲେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କୋଉ ସେକ୍ସନ ପରେ କୋଉ ସେକ୍ସନ ଆପଣ କୋଉ ଟପିକ ପରେ କୋଉ ଟପିକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଭଲସେ ହଉଛି। ଆଉ ଇଂଲିଶ ରେ ପଢେଇଲେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମ୍ୟାଡାମ ସେଇଟା। ସେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ କିଏ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ କି ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ନହେଲେ ଇଂଲିଶ ରେ ପଢାନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଇଂଲିଶ ପଢେଇଲେ କଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଫାଇଗ୍ରାମ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ମେଟେରିଆଲ ରେ ଆମେ କେମିତି ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ କରିବୁ ତା ପର ଟପିକ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ନାଇଁ ଆଜି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ ପୁରା ମାନେ ଯୋଉ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗ୍ଲିଚ I was unable to show you that PowerPoint. PowerPoint ରେ ପୁରା ପାଥୱେ ଯୋଉ ଥିଲା, ସେ ପାଥୱେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଯେତିକି ପସିବୁଲ ମୋ ପାଖରେ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି ଏମିତି ଖାଲି ଦେଖେଇକିନା ପଢେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ ୟା ପରେ ଇଗ୍ନୁ ଥ୍ରୁରେ ଯେତିକି ଆମେ କ୍ଲାସ ନେଇପାରିବୁ ସେତିକି, କାହିଁକିନା we are assigned only this number of classes. ଖାଲି ଏଇଟା ଆମେ କରିଦବା, ଟିକେ ପଢିଦବା ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ ଟା, କାହିଁକିନା ଆଉ 10-15 ମିନିଟ ହିଁ ପଢିବା। କାହିଁକିନା ତାପରେ ଆମେ ଆଉ 10 ମିନିଟ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବା କେମିତି କଣ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବା। So we will go to neurotransmitter secretion. Okay. Please bear with me for another 15 to 20 minutes. Let me complete this one. So neurotransmitter ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। So some neurotransmitters transmitters ତାର example ମୁଁ କହିଦଉଛି। acetylcholine, norepinephrine, dopamine, GABA ହଉଛି କଣ, ଗାମା amino butyric acid, glutamate, serotonin, histamine. These are all neurotransmitters, and there are around 40 to 50 neurotransmitters that are found in human neurological system, and still the research is going on for finding it out of more neurotransmitters. Neurotransmitters ର କାମ କଣ ନା, these neurotransmitters, they stimulate the they may stimulate, they may block, or and otherwise they can alternate functionally. ମାନେ ତାର ଯଦି କିଛି ଫଙ୍କସନ ଥିବ ତାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ କରିବ। ସୋ ଏଇ ୟୁନିଟରେ ଆମେ ପଢିବା, ମାନେ ଏଇ ୟୁନିଟରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ କି what are neurotransmitters, neurotransmitter function କଣ। There are various glands that are found in the brain. ହେଲା, ସେଇ secretory glands କି କହିପାରିବେ, ଯେମିତି କି ଆମର ଆଉ କହିବା ପାଇଁ କି ତ ଟାଇମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି। there is pineal gland, there is pituitary gland। ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ glands ଗୁଡାକ ଅଛି, these are secretory glands of our brain. Okay, and these are two most responsible glands that help in releasing hormones. Pineal gland location ଜାଣିଛନ୍ତି, it is situated at the back of corpus callosum, and it is a endocrine gland that secretes melatonin. Melatonin କଣ ନା ଆମର sleep କୁ ଯୋଉଟା regulate କରେ। A good amount of happy if you get a good amount of sleep, that is due to this melatonin hormone. ଆଉ melatonin hormone ଆମର skin color କୁ ବି affect କରେ, melanin, melatonin. Okay. Then if you come to pituitary gland, it is located at the base of the brain, and it secretes hormones. It is a pea-sized endocrine gland, and it regulates the release of many crucial hormones that is involved in regulating the body activities. Okay. तो ये जो hypothalamus जो अच्छी हमारा, it secretes hormones. Hypothalamus secretes hormones to stimulate the pituitary gland, and these hormones are your corticotrophic hormone releasing hormone, dopamine. Dopamine is another neurotransmitter. ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଥଲେଟ୍ସ ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଡୋପାମାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରାଯାଏ।
कि माने तांको एक्टिव रखिबा पई कि दिस डोपामाइन इज वेरी नेसेसरी जो माने डोप टेस्ट रे फेल कर जंती जो माने डोपामाइन इंजेक्शन नै थांती से माने डोपामाइन टेस्ट रे फेल करंती आ सेते पे से माने एथलेटिक्स रो बाहरी भी जानते एमती बहुत केसेस है सो दिस इज वन काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आ गोटे अछि हार्मोन कोन गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जोटा कि आ गोटे अछि हमर ग्रोथ हार्मोन सोमाटोस्टैटिन थायरोट्रोपिन जोटा थायराइड रेगुलेट करे so these are some hormones that are secreted to stimulate the pituitary gland then there is a pineal gland mu kahili pineal gland it regulates the circadian rhythms जो changes हमारा body brain behavior रे हुए 24-hour cycle रे हुए so this is all regulated by the pineal gland and it secretes melatonin that is the sleep hormone if melatonin माने sleep regulate करिबा सहित it also helps in regulating the neuronal function यदि न्यूरो डिजेनरेट माने करि गला ताहले हमरा different types of diseases हुए that is Parkinson's disease and Alzheimer's disease okay the pineal gland it consists of neurons neuroglial cells and some special secreting cells are present these special secretory cells are known as pinealocytes okay then mechanism of neurotransmission एडा आपण माने जानि चंदी that is presynaptic each synapse it consists of presynaptic membrane postsynaptic membrane and there is a synaptic cleft for referring this what gala page number एटा आपण पेज नंबर 1667 को पढांतु फिगर 8.3 so in figure 8.3 you can see the presynaptic and postsynaptic neuron which shows neurotransmitter in transmission मझिरे जो पार्ट अछि that acts as the synaptic cleft now there are जो तमरा axon terminals अछि सी कोन करिवो ना तमरा synaptic vesicles रो neurotransmitters release करिवो and these neurotransmitters they are released they are captured by the receptors दा माने एटा गोटे एमती थिबो आउ तापरे एमती एटा होची तमरा dendritic post synaptic dendrite and this is your axon terminal this axon terminal it will release the neurotransmitters and these neurotransmitters it is again captured by the receptor that is present on the postsynaptic dendrite सेमती कोन हुए ना हमरो neurotransmitters हमरो गोटे axon रू आ गोटे dendrite पाखो को जाय so this is the process how your neurotransmission occurs आ गोटे होची हमरो दुईटा टाइप रो synapse अछि गोटे होची chemical synapse आ गोटे होची electrical synapse chemical synapse केते बेले हबो ना जेते बेले distance between the two cells जेते 20 nanometer हेबो सेते बेले हमरो chemical synapse हुए किंतु 20 nanometer रो जेते कम हे जिवो then माने अराउंड 3 to 4 nanometer जदि थिबो सेही केस रे हमर electrical synapse हबो electrical synapse 4 nanometer पर आ हे परिबोनी तापरे chemical synapse रे कोन हबो ना एठी ट्रांसमिशन स्पीड होची माने जस्ट सेवरल मिली सेकेंड्स किंतु इलेक्ट्रिकल सिनाप्स जेहेतु डिस्टेंस कम सेठी कोन हबो ना संगे संगे इंस्टेंटेनियस होची ट्रांसमिट करिबो होची सिनाप्स तापरे तुमरा केमिकल सिनाप्स सेठी कोन हुए ना देयर इज नो लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ जेति कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहतले सेति कि ही हबो कोठी किछि लॉस करिवनी किंतु इलेक्ट्रिकल सिनाप्स रे कोन हबो ना जेमति लीकेज हेई चालिबो गोटे गोटे थरो से लीकेज रे कोन हबो ना सिग्नल स्ट्रेंथ डिमिनिशेस माने कमी जीवो जोटा एठी 0.1 रे जहा के इलेक्ट्रिकल सिनाप्स हेथिबो थरो को 10 टा सिनाप्स हेथिबो माने 10 नंबर बेलकू सेटा कमी जायथिबो तार सिग्नल स्ट्रेंथ ता so this is all about different types of synapse that is chemical transmission achi chemical transmission re kon hoy na there is release of neurotransmitters ଆଉ these neurotransmitters are known as also chemical messengers ଆଉ तापरे अछि हमरो presynaptic neuron
Can you share the PPT? Yes, I can share the PPT. I will share with you. PPT रे किछि नाही, खाली डायग्राम्स गुडाक थिला जोटा तुमरो इग्नू मटेरियल्स रे अछि, आउ बेसी किछि नाही, मु पठे देबे. ओके, सो एटारे कोन होइछि ना तुमरो केमिकल ट्रांसमिशन रे देयर आर केमिकल रिगार्डिंग सेमेस्टर. ओके, जस्ट मु खाली टिके कंप्लीट करि दे. लेट अस कंप्लीट दिस फर्स्ट. So this transmit signals through the release of neurotransmitters, and these neurotransmitters they act as your chemical messenger. Electrical transmission रे कौन हुए ना जेमती न्यूरोट्रांस माने chemical synapse रे there is a physical link थिला. एठी electrical transmission रे सेमती physical link न थाए. एठी कौन हुए ना electrical synapse. This link is made up of a gap junction. What a gap junction thibo, and this gap junction it has a simply a channel that permits एपट रु एंड रु आयंस एपट को जीव माने प्री सिनाप्टिक टू पोस्ट सिनाप्टिक सेल गोटे ions through रे जीव. There are no vesicles that are used as in case of chemical synapse. Okay, so it takes some milliseconds for the chemical synapse, किंतु इलेक्ट्रिक ता बहुत शीघ्र हुए, किंतु गोटे गोटे थर जतले रेसिप हे चले सेटा कोन करे ना डिक्रीज हे जाए. ओके, so you can see the figure 8.5 chemical synapse ता केमती हुए. फर्स्ट होची action potential arrives at the axon terminal. एटी देखिबे action potential arrives at the axon terminal, then voltage gated calcium channels they open, then calcium enters into the presynaptic neuron. Then after that calcium signals the neurotransmitter vesicles to react. So we are going to end this one because it's already time. Message आसी गलानी. So एगुडा को पढ़िबे टिके. So excitatory and inhibitory postsynaptic potentials. You can mail me your queries. I will get some time on the Sundays or holidays so that I can reply you back. Okay. तापरे already message आसी गलानी कि हमें time पार ही गलानी. तो there is spatial and temporal summation. तो बुझिले पोस्ट सिनाप्ट एना बुझी जंदे समस्ते. एथरे आउ इम्पोर्टेंट होची माने जो शॉर्ट क्वेश्चन पाई कि सिनाप्टिक प्लास्टिसिटी. तापरे आ गोटे होची क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स. गोटे होची एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिटर्स अछि, आ गोटे होची इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिटर. एबे मते जने पचारुथिले सेरोटोनिन कथा. तो सेरोटोनिन होची गोटे इनहिबिटरी ट्रांसमिटर्स. डोपामाइन भी गोटे इनहिबिटरी ट्रांसमिटर्स. तापरे आ गोटे अछि हमरो न्यूरो हार्मोन्स रे होची हमरा ऑक्सीटोसिन, आ गोटे होची vasopressin. These two hormones they act as neurohormones, and there are some chemicals of modulators that is acting as neuromodulators. They are histamine, dopamine, serotonin, acetylcholine, norepinephrine. एगुडा को होची हमरा neuromodulators. This is all given in page number 172. That is classification of neurotransmitters. Okay, so there are two types of neurotransmitters. One is inhibitory, another is excitatory. So egoda ko padhibe. There are some disorders that are associated with neurotransmitters. One is first mu kahithili Alzheimer's disease, जोटा कि मेलाटोनिन माने तापरे नेक्स्ट होची डिप्रेशन, जो it is also due to your neurotransmitters problem. Then schizophrenia, Parkinson's disease, epilepsy, Huntington's disease, myasthenia gravis. These all diseases are due to the dysfunctional of neurotransmitters. जदि neurotransmitters कोठी ठीक से माने passes न कला किंबा हमरो जैसे फॉर एग्जांपल हम एपिलेप्सी नोचे. से एपिलेप्सी माने कोन? दैट इज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग. ना आमे जेमती एबे मु धर कथा कहूची एमती रही रही कथा कहूची सेटा नुहे एपिलेप्सी. एपिलेप्टिक डिसऑर्डर होची कंटीन्यूअसली से किछि भाबी किना कहि पानथिबो. दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी इन गाबा. गाबा होची गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड. सेटा रे जदि डेफिशिएंसी रहिला
आउ तापरे होची ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर गोटे तार जदि डेफिशिएंसी रहिला ताहाले सेटा एपिलेप्सी हबो। पार्किंसंस डिजीज कोन पई कि हुए ना पार्किंसंस डिजीज होची सप्लाई माने डोपामाइन जदि अधिक माने सप्लाई हबो इट विल डिस्ट्रॉय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ସେଇଠି ଆମର ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହବ। ଡିପ୍ରେସନ ଆମର କଣ ନରଏପିନେଫ୍ରିନ୍ ସେରୋଟୋନିନ୍ ଡୋପାମାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାଇଟେସନ ଲେଭେଲ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ତ ସେଇ କେସରେ ଆମର ଡିପ୍ରେସନ ହୁଏ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜିଜେସ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଭେନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଡିବ ହଉଛି ୟୁପିଏସସି ହଉ କିମ୍ବା ଓପିଏସସି ହଉ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଆସେ। So this is all about the second block that we have completed today. I will reach out to you. You can reach out to me through mail. Most probably we will be meeting tomorrow with the block 3. गोटे थर आपण जदि रीडिंग मारिबे भलो से पूरा लाइन बाय लाइन जदि थरे न भी होची दुई थर रीडिंग मारंतु तीन थर रीडिंग मारंतु। हाँ जो एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न कथा कहउचंती दिस एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न पूर्व वर्षर एग्जाम क्वेश्चन इग्नोर साइट रु मिली जिवो हैला। मैम हाँ मैम हमें जुलाई सेक्शन रे एडमिशन करछु इग्नोर रे डिसेंबर रे सेमेस्टर देई हबो। हाँ दे परिबो। मैम दीटा सेमेस्टर ना गोटे सेमेस्टर तमे जितने चाहिए दे परिबो। आज्ञा मैम थैंक यू। सो यू थॉरो मैम मटेरियल आपण माने भलो से पढो। हाँ क्वेश्चन पेपर पुराना क्वेश्चन एग्जाम मैम एग्जाम फर्स्ट टाइम पे आबो आगरो केबे एग्जाम हेनी सेमे क्वेश्चन पैटर्न जाने। अच्छा मु कहि दउची हमर क्वेश्चन पैटर्न होची शॉर्ट क्वेश्चन थाए। आपण पूर्वर सब जो एमएससी किंबा एमए रो जो प्रोग्राम्स अछि तार क्वेश्चन भी आपण माने देखिबे जदी जानि परिबे क्वेश्चन पैटर्न कोन अछि। एमएससी जूलॉजी जेहेतु फर्स्ट टाइम खोलीची आउ जो भी माने हमर अछि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट गुड़ाकर जोटा मास्टर डिग्री रो जहा क्वेश्चन पैटर्न अछि आर मध्ये से भलिया ही रहइबो। मैम हाँ मैम आमे दीटा जदि सेमिस्टर दबो तो दीटा भी सेमिस्टर रो असाइनमेंट हमको दबा को पड़िबो ना ना गोटे सेमिस्टर दीटा देबो। मैडम गोटे सेमिस्टर जदि हमें देले देन सेकंड सेमिस्टर रो असाइनमेंट आगुतरा फिल अप करके देई होबो कि ना सही जो जेबे दवा सेबे ही असाइनमेंट सबमिट करते पड़ियो से ईयर रो असाइनमेंट देबे तापर संग संग एग्जाम सही मास रे ही देबे। ठीक अछि मैम इन तो we असाइनमेंट will- पेन वो यूज कलर पेंसिल हाँ हाँ कलर पेंसिल यूज कर परिबे किंतु माने एग्जाम रे कर परिबे। काली भी मैम असाइनमेंट रे माने मैम असाइनमेंट रे केवल असाइनमेंट रे केवल ब्लू एवं ब्लैक पेन ने लिखिबो असाइनमेंट को ना अलग किसी कलरिंग पेन यूज कर परिबो कि माने ब्लू ब्लैक आपण ये भी यूज कर परिबे पेंसिल भी यूज कर परिबे। मते टिके आउथरे देखिया पड़िबा असाइनमेंट रेगुलेशन टा कोन अछि मु देखिनी आपण मानकर देखि मु काली कहबी। आज्ञा आज्ञा मैम आमे एठी रखिबा। गुड नाइट एवरीवन। हां ओके मैम गुड नाइट। भाई मैडम को ईमेल आईडी का पाटी अछि जे सेंड करंतु। मैसेज बॉक्स रे देई छंती मैडम आपण चेक करंतु। ओके थैंक यू। एक्चुअली मु लेट रे जॉइन हली 7:40 रे जॉइन हली तो मो पाखे से मेसेज को शो ही करूनी ता पाखे अछि मते टी मेसेज करि परिबे के तो सेटा अछि bal.abhipsa21@gmail.com। ओके थैंक यू।